हेलो फ्रेंड्स, दिस इज करण कुमार। वेलकम टू गोल्डन मैथमेटिक्स एकेडमी। आज हम इस ट्यूटोरियल में मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि ये होता क्या है। स्टार्ट करते हैं। A figure which is used to represent a whole series should neither have the lowest value nor the highest value, या बोल सकते हैं हाईएस्ट इन द सीरीज। but a value somewhere between these two limits possibly in the center where most of the items of the series cluster. Such figures are called measures central tendency, या और इसको बोल सकते हैं एवरेजेस। मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और बोल सकते हैं एवरेजेस। देयर आर 5 types of averages in common use। तो आइए देखते हैं कौन कौन सा है। पहला है, फर्स्ट है अरिथमेटिक। फर्स्ट क्या है तो अरिथमेटिक एवरेज, या इसे बोल सकते हैं मीन। सेकंड है मीडियन। थर्ड है मोड। फोर्थ है ज्योमेट्रिक मीन एंड लास्ट वन, फिफ्थ है हार्मोनिक मीन। जैसा कि आप सब ये जानते हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा समय नहीं देंगे। और जो मेन टॉपिक है हमारा मोमेंट्स है और उसके टाइप्स हैं, हम उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो हमारा मोमेंट्स का होगा, और उसमें हम देखते हैं कि कैसे मोमेंट्स फाइंड आउट किया जाता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।